starting for today's session. तो हमर लास्ट क्लास रे गोटे भूल रह जाइतला तो सेटा फर्स्ट करेक्ट करिवा देन वी विल मूव ऑन। तो लास्ट क्लास रे हम कहितली चार्टर एक्ट 1853 रे तमरो गवर्नर स्ट्रक्चर थिला। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो स्ट्रक्चर थिला 4+1 और गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल रो स्ट्रक्चर इज द एंटायर थिंग। तो हम कहितली तमरो मेंबर्स थिले 4+1+6 11 मेंबर्स, बट एटी गोटे मु मिस कर देछि। तमरो आउ जण मेंबर थिले, इट वाज द कमांडर इन चीफ। ऑलराइट, कमांडर इन चीफ जण मेंबर थिले, से एग्जीक्यूटिव काउंसिल ला पार्ट नथिले बट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल ला पार्ट थिले। तो टोटल मेंबर 12 ही रहबे। सो 12 इज द करेक्ट। मु लास्ट क्लास रे ताकू 11 करथली, सेटा भूल। 12 होची राइट आंसर। तो कमांडर इन चीफ भी इंक्लूड हेबे गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट ही वाज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। लेटर ही विल बी बिकम पार्ट ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एटा हमें देखिबा आज, बट एई जिनसटा मिस कर जाइथिले। गोटे ट्रिक देखदबो जे तमरो 3+1 स्ट्रक्चर जो थिला एटा 3 वर्ष पई थिला। तमरो 3 सॉरी 3 वर्ष न तर 3 थर पई मेंटेन हिथिला 3+1 स्ट्रक्चर टा। ओके, तो एटा तमरो 1793 1813 अमेंडिंग एक्ट एथरे 3 थर रिपीट हिथिला 3+1 स्ट्रक्चर। आउ ए जो 6+6 जो थिला, जो 6 legislative council 6 legislative members of the expanded council of governor general legislative council, ए 6 जण मेंबर मानक भितरे 2 जण सुप्रीम कोर्ट जजेस थिले, सुप्रीम कोर्ट जजेस थिले प्लस 4 जण इंडियन सिविल सर्विस रो मेंबर्स थिले। ओके, ए जो 2 जण सुप्रीम कोर्ट जजेस थिले, जणे होचंती चीफ जस्टिस प्लस अनदर इज ही वाज वन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जणे चीफ जस्टिस आ जणे जज, नॉर्मल जज। और जो 4 जण इंडियन सिविल सर्विसेस रो मेंबर्स थिले, सो दे वर कंपनी सर्वेंट्स। ऑलराइट, they were company servants, but they were appointed by local provincial governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. Madras, Bengal and Agra. Alright, तो तो एई हमर 1853 एक्ट रे तो तमरो लोकल रिप्रेजेंटेशन रो इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे इंडियन रिप्रेजेंटेशन मानकर फर्स्ट टाइम हमें देखिया को मिलुची। ओके, फर्स्ट टाइम इंडियन मेंबर्स मानकर representation, but they were officials only, officials of the company. ये जो इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर माने कंपनी रो ही ऑफिशियल्स थिले। ओके, बट फर्स्ट टाइम इंडियन मेंबर मानक रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे 1853 चार्टर एक्ट रे हम देखिया पाइथिलु। ओके, तो नेक्स्ट मूव ऑन करिया। तमरो क्राउन रूल आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 तमरो क्राउन इंटरफेयर कला 18 क्राउन रूल फ्रॉम 1858 टू 1947। तो फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आसला, दैट इज द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एबे तमर आगर जति गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, गवर्नर जनरल रो टाइटल टाको हटि दिया गला, एबे वाइस रॉय रह गला। एक्चुअली पूरा हटि दिया नै था, वाइस रॉय ताको रिनेम करा गला। ए एक्ट रे पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय टाइटल दिया गला। तो वाइस रॉय इज ए लैटिन वर्ड, viceroy is a Latin word of two, has two components, that is first is vice, vice means in place of, rex, rex means king. Okay, तो king जगह रे जे रूल करूची इंडिया रे, so he became the representative of the British monarch in India and not just an agent of the company. Okay, तो कंपनी एजेंट नो, he is a representative of the British king. ओके, तो ए डेजिग्नेशन टा प्राइमरीली डिप्लोमेटिक और सेरेमोनियल कॉन्टेक्स्ट में दिया गला, बट गवर्नर जनरल टर्म टा भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में कंटिन्यू करा गला। ओके, गवर्नर जनरल टर्म टा को एबोलिश करा गला, नहीं कंटिन्यू करा गला। और ए जो अरेंजमेंट टा माने ताको वाइस भी कहा जाउतला, डिप्लोमेटिक की सेरेमोनियल कॉन्टेक्स्ट रे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट रे ताको गवर्नर जनरल भी कहा जाउतला। ए अरेंजमेंट टा टिल इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ 1947 टिल सेपंत ए गवर्नर जनरल टाइटल टा, ए जो वाइसरॉय टाइटल टा रिटेन करा गला until the dominance of India and Pakistan were formed. Okay,
तो जिते डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान फॉर्म करा गला तो सेते भाइसरॉय टाइटल टाकू अबोलिश कर दिया गला पुणी गवर्नर जनरल टाइटल दिया गला ओके से जिनसटा भी आमे आज देखिबा तो गवर्नर जनरल जेंते हमर फर्स्ट लॉर्ड माउंटबेटन हेले तो ताको भाइसरॉय कुआ गला ओके से जिनसटा आमे देखिबा हमर 1947 एक्ट हम देखिबा आज तो भाइसरॉय कुआ गला ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी को अबोलिश कर दिया गला एंड कंपनी जहाँ टेरिटरी और जहाँ पावर्स दे वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन so viceroy became governor general okay canning lord canning was the first viceroy tame emti भी कहि परिबो lord canning was the last governor general of india okay lord canning तार tenure 1856 to 1862 so he was the last governor general of india he was the first viceroy of india एमती भी कहि परिबो canning so end of dual government तब जेमती देखथिला हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एटा अबोलिश करा गला गोटे नुवा ऑफिस तयारी गला दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जोटा की दैट वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जने कैबिनेट मिनिस्टर हेले सो दिस कैबिनेट मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट ऑफ द 10th ए जो कैबिनेट मेंबर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही वाज असिस्टेड बाय 15 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल 15 member advisory council so first secretary of state was edward stanley was the first secretary of state for india तब जेतु एबे कंपनी को अबोलिश करा गला कंपनी रो दायित्व एबे ब्रिटिश गवर्नमेंट ऊपर आसला तो गोटे नुआ ऑफिस तयारी करा गला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड दिस ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इट वाज अ कॉर्पोरेट बॉडी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल जो ताकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस 15 मेंबर्स दे कुड स्यू और बी स्यूड इन इंग्लैंड एंड इंडिया तो या माने कौन तो कॉर्पोरेट बॉडी बीइंग कैपेबल ऑफ टू स्यू और बीइंग स्यूड ता माने होची this body is legally accountable to face lawsuits from Indian subjects हुंतु कि British merchants हुंतु कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो माने क्रेडिट देइचंती तो सेई मानको पई एई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल दैट इज लेबल बिकॉज कौन हितला ना ईस्ट इंडिया कंपनी जब डिजोल्व करा गला सो तार बहुत गुडे लीगल और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से छाड़ी गला तो हठात डिसोल्यूशन ही गला तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एक्टेड एज ए कॉर्पोरेट बॉडी गोटे लीगल बॉडी तो तो एई बॉडी ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ ऑब्लिगेशन गुड़ा रहीगला ताकू रिटर्न करिवो जेमति तांकर ईस्ट इंडिया कंपनी किछि डेट अछि कॉन्ट्रैक्ट अछि कि प्रॉपर्टी राइट्स अछि कि इंडियन सब्जेक्ट मानकर किछि केस चलछि तो सेही जिनस गुड़ा सब बुझिबो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओके तो जो नुआ एडमिनिस्ट्रेशन जोटा तयारी हला ताकू लीगली अकाउंटेबल करिया पई अनलाइक द ईस्ट इंडिया कंपनी किछि लीगल अकाउंटेबिलिटी नथिला से तार मन इच्छा जहाँ चाहे जहाँ ता करतला करप्शन करतला जहाँ करतला बट जेहेतु एबे एटा डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर रे आसला तो एबे ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहिले एटा गोटे लीगली अकाउंटेबल बॉडी करिया को अनलाइक द ईस्ट इंडिया कंपनी ओके तो सेही पई ता माने ही या it became a corporate body that could be sued or it could sue in England and India सेम जिनस तमे जेमति एबे भी तमे देखि परिबो प्राय लिटिगेशन केस रे आज भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बहुत गोटे केस रे पार्टी थाए इट इज द हाईएस्ट लिटिगेटर इन इंडिया इन ऑल एवरी कोर्ट ओके तो सिमिलरली दैट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सो भी काम से थेला तो जो ट्रांजिशन को स्मूथली मैनेज करिया पई ए कॉर्पोरेट बॉडी टा तयारी हला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो नेक्स्ट कम्स द इंडियन काउंसिल एक्ट तो देखो गोटे होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एटा ताकू गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कुहा होतला ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को आउ काउंसिल्स एक्ट ओके तो गोटे जो जिनस देखि देबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे तो देखो एथरे बेसी किछि चेंज करा है तो এই act रे खाली improve करा गला the administrative machinery by which India was to be controlled from England okay because एबे कंपनी पळेला तो इंग्लैंड रे केमिति मैनेज करा जीवो ब्रिटिश रूल को तो सेही पई ही स्टेप्स निया गला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 रे इंडिया रे ऑन द ग्राउंड रे सेमति किछि सब्सटेंशियल चेंजेस हला नाही ओके तो এই জিনিসটা মার্ক করিব এতরে দিস ওয়াজ जस्ट ए कॉस्मेटिक चेंज कॉस्मेटिक तो नो कहबिनी बट एटा इंग्लैंड रे केमते एडमिनिस्ट्रेशन होबो सेही जिंस ऊपर बेसी फोकस हला नॉट इन इंडिया
that is the Government of India Act. Then comes the Council Act. तो Council Act तुम Government of India Act कौन, Council Act कौन, एटा भी टिके देखिदवा। तो तमरो जो आगु तीनटा काउंसिल एक्ट अच्छी 1861, 1892 और 1909, 1909 ओके। तो এই जो काउंसिल एक्ट गुड़ा अच्छी एगुड़ाकर कहीं काउंसिल एक्ट कहूँ बिकज दे अमेंडेड द स्ट्रक्चर हो कि मेंबरशिप हो कि पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल कि भाइसरय लेजिस्लेटिव काउंसिल याको स्ट्रक्चर और रिफॉर्मिंग करिवारे बेसी फोकस रहला ए जो 1861, 1892 और 1909 एक्ट रो ओके। बट जो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एई मानक स्ट्रक्चरिंग और फंक्शनिंग रे बेसी फोकस रहला ए तीनटा एक्ट। तो सेत पई गुडा को काउंसिल एक्ट कहा जाए ओके। बट तमर जेमती तीनटा एगेन पुणी तीनटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अछि जोटा कि तमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1919 एंड 1935। तो सेमाने they तीनटा act they address the overall administrative framework of the overall administrative framework of the British rule okay। तो जेहेतु ओवरऑल से सब किसी को एड्रेस करते तो से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहला ए तीनटा एक्ट केवल जदि काउंसिल रो स्ट्रक्चरिंग को एड्रेस करते तो सेत पई एमानकर एमान काउंसिल एक्ट कहला ओके। तो एबे देखिया कोन कोन सब एड्रेस हेतला। तो भाइसरॉय एबे लॉर्ड कैनिंग 1861 बेले को ओके। अगेन सी लॉर्ड कैनिंग तो 1862 बेले गला। तो 61 बेले को लॉर्ड कैनिंग भाइसरॉय। तो इंडियन मानक रिप्रेजेंटेशन आसिला एबे भाइसरॉय कुड नॉमिनेट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल्स ओके। कैनिंग नॉमिनेटेड 3 नॉन ऑफिशियल्स राजा बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव ओके। एबे ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल ई जिंसटा कोन ओके। तो भाइसरॉयଙ୍କର जो लेजिस्लेटिव काउंसिल अच्छी तो से दी प्रकार मेंबर होते गोटे ऑफिशियल मेंबर्स गोटे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ऑफिशियल मेंबर्स होचंती ब्रिटिश ऑफिशियल्स आ गवर्नमेंट अपॉइंटी जो माने कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन रे हेल्प करथले लाइक सिविल सर्वेंट हो, मिलिटरी ऑफिसर्स हो कि मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ओके। सो दे वर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेड इंटरेस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ओके। तो सेमाने स्मूथ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करिया पई ऑफिशियल मेंबर माने थिले। नॉन ऑफिशियल मेंबर माने they were the individuals not directly employed by government okay। ସେମାନେ employed by government directly नुह but they were Indian elites like जमींदार हो, प्रिंसेस हो कि एजुकेटेड प्रोफेशनल हो ओके। तो ये जो एक्ट रे तमर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मानकू रिप्रेजेंटेशन पई जो दिया गला ए 1861 एक्ट रे सेमती किछि एक्सप्लिसिटली मेंशन हेइ नथला जे एई एक्ट रे नॉन ऑफिशियल माने इंडियन केवल इंडियन हेबे कि इंडिया कि नॉन इंडियन हेबे सेमती किछि मेंशन नथिला। तो एई एक्ट रे 1861 एक्ट रे नॉन ऑफिशियल्स माने तमरो बोथ इंडियन भी थिले प्लस नॉन इंडियन भी थिले ऑलराइट। नॉन इंडियन भी थिले। तो नॉन ऑफिशियल माने कोन से माने ब्रिटिश को द्वारा किछि एम्प्लॉयड नुह ओके। जमींदार हो, प्रिंसेस हो बट इलिट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ओके। तो तांकर सेमानको कोन पई ब्रिटिश एबे गवर्नमेंट तांको नेले तांकर काउंसिल रे बिकॉज़ दे वांटेड टू obtain timely the public sentiment with respect to measures that were proposed to be taken by government okay। तो इंडियन मानको एबे एसोसिएट करिया को समान चाहतले एडमिनिस्ट्रेशन रे। तो सेति पई एई एक्ट रे समान नॉन ऑफिशियल इंडियन मानको भी इंक्लूड कले तांको गवर्नेंस रे ओके। तो फास्ट तमरो 3 जण नॉमिनेट करा गले, 3 जण इंडियंस मन नॉमिनेट करा राजा बनारस, महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव ओके। तो ये जो 1861 एक्ट रे काउंसिल रे कोन रिफॉर्म हला तमरो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को एक्सपांड करा गला। तमे एडी जेमति देखछरो एबे 4+1 + 6+1 6+1 को 7 भी कहि दबा 4+1 + 7 ओके ओके। तब 6+1 भी कह जाओ ओके। एई रिंसटा ओके +1 दिस इज द कमांडर इन चीफ 4+1 + 6+1। तो 1851 एक्ट रे तमर ए 4+1 रे आ गोटे एक्स्ट्रा मेंबर आसले 4+1 + 1 दिस मेंबर वाज एन एमिनेंट जूरिस्ट ओके। एमिनेंट जूरिस्ट एबे ये होची गवर्नर जनरल वाइसरॉय रे एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे आसिले। तो नाउ दिस स्ट्रक्चर बिकेम 5+1 ऑलराइट। सो एबे कोन हला 1861 एक्ट रे ए स्ट्रक्चर ता एबे हला
गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल स्ट्रक्चर हम 5+1 प्लस जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर मान रहिले 6 to 12 ओके आइदर मिनिमम 6 जन मेंबर रहिबे कि मैक्सिमम 12 जन मेंबर रहिबे ओके 1861 एक्ट रे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जने जूरिस्ट एमिनेंट जूरिस्ट ऐड हेले तो 5+1 स्ट्रक्चर हैला प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिलर जो मान रहिले they can be minimum 6 or maximum 12 तो ये प्रोविजन टा आसिला काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 तो काउंसिल रिफॉर्म जेमति कहले काउंसिल रिफॉर्म एई दिनसटा हेतला 1861 एक्ट रे आ जो 6 to 12 हेतले याको भितरे ही ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स एपन तो किसी इलेक्शन रा आईडिया नहीं बस दे वर नॉमिनेटेड बाय द वाइसरॉय ओके तो वाइसरॉय नॉमिनेशन ही करथले इलेक्शन रा आईडिया किछि ही नथिला ओके तो एई दिनसटा तमे देखिबो तमरो तमे एटा भी देखि परिबो तमरो 1853 एक्ट रे तमरो देखो इंडियन माने भी अछंती इंडियन सिविल सर्विस माने भी अछंती मद्रास बॉम्बे बेंगल आग्रा रो फर्स्ट टाइम इंडियन मेंबर को रिप्रेजेंटेशन दिया हला बट प्लीज नोट दैट ए माने ऑफिशियल समझते थिले सुप्रीम कोर्ट जज हो इंडियन सिविल सर्विस मेंबर्स हो ए माने एवरीवन इज एन ऑफिशियल ओके नॉन एମାନଙ୍କ काम ही ସେମାନେ ब्रिटिश जो कंपनी रा एडमिनिस्ट्रेशन संगे काम करछले बट 1861 एक्ट रे फर्स्ट टाइम नॉन ऑफिशियल मेंबर मानको इंक्लूड करा गला एडमिनिस्ट्रेशन रे ओके तो ये जिनसटा मन रखियो तो फर्स्ट टाइम इंडियन मानको रिप्रेजेंटेशन दिया हेतला ठीक इतरे दिया हेतला ठीक 1853 रे दिया हेतला बट नॉन ऑफिशियल्स माने जो रियल इंडियंस माने सेमानको फर्स्ट टाइम दिया गला तमरो 1850 सॉरी 1861 एक्ट ओके तो 1861 में भाईस रे कैनिंग पुनी चूज करतले बनारस राजा पटियाला राजा और सर दिनकर राव ओके so there was a revolt of 1857 पर there was a need to involve Indians in law making तो सेट पई ए जिनसटा करा गला आउ एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करा गला लेजिस्लेटिव पावर्स वर रिस्टोर्ड टू बॉम्बे एंड मद्रास ओके तो आमे देखथिले आगुरु जिमती प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एबे धीरे धीरे तांकर लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन स्टार्ट हला 1937 बेलू को फुल प्रोविजनल ऑटोनॉमी मिल गला ओके लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन स्टार्ट हला तो अलग अलग जगह नुआ नुआ काउंसिल की तैयारी गला बेंगल रे नुआ काउंसिल तैयारी गला प्रोविंशियल काउंसिल नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रे 1886 रे नुआ काउंसिल पंजाब रे भी नुआ काउंसिल सब तैयारी हला ओके एंड आगुरु जेमती केवल बॉम्बे और मद्रास ही थिला एबे अलग अलग प्रोविंस रे भी नुआ नुआ प्रोविंशियल काउंसिल सब स्टार्ट करा हला ऑर्डिनेंस पावर वाइसरॉय could issue ordinances for 6 months during emergencies okay ordinance एडी स्टार्ट हला 1861 रे एटा मन रखियो एटा प्रीलिम्स पॉइंटर पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग ओके कैनिंग को पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 एक्ट रे इंप्लीमेंट करा गला एक्सेप्ट करा गला तो ईच काउंसिल मेंबर मैनेज द डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली तो जणो को गोटे डिपार्टमेंट दिया गला सी मैनेज करिवो तो अगेन पोर्टफोलियो सिस्टम इज आल्सो तमे कहि परिवो इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स डिवोल्यूशन ऑफ पावर आगुर जेमति सब किछि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पाकर थिला बट एबे डिवोल्यूशन आडू टिके स्टार्ट हला बट देखो ई काउंसिल एक्ट रे सेमति किछि जो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो वाइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल रहला दे हैड नो रियल पावर्स एक्चुअली they had no control over budget they cannot discuss executive actions okay and final tankar jaha bhi law pass habo tar approval it rested with the viceroy and again even if viceroy passed the bill the secretary of state can also disapprove the bill okay to semti kiछि real power devolution nathila indian mana pakare okay next comes the council act of 1892 okay 1892 so viceroy was lord lansdowne so non-official members मानकर increase करा गला more in both central and provincial councils okay तो एथिरे कोन हला तमरो आमे जेमति देखिलु ऊपर 5+1 plus 6 to 12 तमरो 1892 एक्ट रे तमरो 5+1 रहिला दिस इज द गवर्नर जनरल वाइसरॉय गवर्नर जनरल और वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस लेजिस्लेटर जो माने रहिले 10 to 16 मेंबर्स आगुरु 6 रु 12 थिले एबे मिनिमम 10 टू 16 मेंबर्स रहिले दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल ओके वाइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल तो मेंबरशिप बढ़े गला 10 रु 16 भीतर बिकॉज़ 1892 हलानी कांग्रेस आस्ती 1880 कांग्रेस जेमती 1885 रु स्टार्ट हला तो से डिमांड करथला एक्सपांडेड काउंसिल पई एंड अगेन दिस वाज ए एरा ऑफ मॉडरेट्स ओके एरा ऑफ मॉडरेट्स तो तो तांको पुनी इंडियन मानको आहुरी
इंट्रोड्यूस करे पे डिमांड थला तो काउंसिल साइज को एक्सपांड करा गला 10 to 16 ओके तो 1892 रे काउंसिल साइज बढ़ा गला सो मोर इन बोथ सेंट्रल काउंसिल रे 10 रु 16 हला प्रोविंशियल काउंसिल रे तमर वेरिएशन अछि सब काउंसिल अलग अलग वेरिएशन रहला बट इन बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल ऑफिशियल मानक मेजॉरिटी रहिला नॉन ऑफिशियल मानकर मेजॉरिटी रहिला ओके माने बेसी मात्रा रे ऑफिशियल मेंबर ही रहिले so expanded role. Now the council could discuss budget and ask questions to the executive. Okay, but members could put questions within certain limits. Okay, to executive on matter of public interest after giving 6 days notice. Okay, after giving 6 days notice. Okay, तो एटा भी 6 days notice देला तांको प्रिपेयर करियो टाइम मिलिबो तो सेट पई एटा भी सेमती किछि तांको ऊपर चेक एंड बैलेंसेस किछि नथिला तमरो गवर्नर जनरल भाइस रही पर ओके तो नॉमिनेशन प्रोसेस ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स तो नॉमिनेशन एवं कंटिन्यू होतला सेंट्रल काउंसिल रे भाइस रॉय नॉमिनेट करिवे ओके भाइस रॉय नॉमिनेट करिवे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स बेंगल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एमानक रिकमेंडेशन रे भाइस रॉय नॉमिनेट करिवे सेंट्रल काउंसिल को मेंबर्स नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ओके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सेमती प्रोविंशियल काउंसिल रे गवर्नर नॉमिनेट करिवे on the advice or recommendation from district boards municipalities universities जमींदार्स trade associations chambers of commerce कि ट्री प्लांटेशन मानकर टी प्लांटेशन मानकर ग्रुप जो अछि तो बहुत गुडे डाइवर्स रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट मान रहिले तो एमानकर नॉमिनेशन रे प्रोविंसेस रे अपॉइंट करिवे गवर्नर एमानकर नॉमिनेशन रे अलग प्रोविंशियल की पुनी प्रोविंशियल काउंसिल रो नॉमिनेशन रे भाइस रे अपॉइंट करिवे तांकर लेजिस्लेटिव काउंसिल को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ओके तो देखो इथिरे इनडायरेक्ट इलेक्शन रा आइडिया को इंट्रोड्यूस करा हला फॉर द फर्स्ट टाइम ओके explicitly election word mention kara helani but election were introduced via nominations and the elections were very indirect and very remote okay तो जदि कौन सी क्वेश्चन आसे जे को एक्ट रे तमरा फर्स्ट आइडिया ऑफ इलेक्शंस को एक्ट आसला तमे 1892 मारिबो ओके 1892 मारिबो बिकॉज़ देखो इतरे तमरो अगेन प्रोविंशियल काउंसिल रे जो माने सब आछंती से माने किछ रेकमेंड करिवे मेंबर माने को से रेकमेंडेशन को भाइस रे अपॉइंट करिवे ओके तो एबे प्रोविंशियल काउंसिल को जो माने इलेक्ट होचंती से माने भी बहुत इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस रे ही इलेक्ट होचंती तो आइडिया ऑफ इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन रो आइडिया 1892 एक्ट रे हम पाउछु इलेक्शन वर्ड एक्सप्लिसिटली मेंशन हेनी बट नॉमिनेशन थ्रू हम गोटा आइडिया ऑफ इलेक्शन पाउछु फॉर द फर्स्ट टाइम ओके तो अगेन गोटे फैक्ट तमरा बजेट जो हम जो देखिले बजेट डिस्कशन जो सब अछि तो इंडिया रे बजेट वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1860 इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम इन 1860 तमरा इंडियन पेनल कोड 1860 बाय थॉमस मैकॉले हम पूर्व सेशन देखथिलो तो एटा गोटे फर्स्ट प्रीलिम पॉइंटर एटा गोटे मन रखियो ओके फर्स्ट टाइम 1860 रे इंट्रोड्यूस हेतला बजेट ओके Central Council of Recommendation देखले Inter Council then comes the Indian Council Act of 1909 that is the parliamentary reforms okay again इथरे पुनी काउंसिल एक्ट जेतु तो काउंसिल एक्ट पुनी कोन हला इथरे मेंबरशिप इंक्रीज्ड ओके 1909 हमें किम देखिले 1892 then 1909 act रे membership increased from 16 to 60 okay it is 5 plus 1 plus 60 members now 60 legislative councillors okay एटा होजी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रा मेंबरशिप एमती तला 60 बढ़ी गला 16 to 60 एट देजी 16 to 60 एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे ऑफिशियल मेजॉरिटी स्टिल रिटर्न करा गला ओके ए जो 60 मेंबर्स दे वर एक्सक्लूडिंग द एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स ओके एटा मु देखै छी ऑलरेडी दिस 60 members are not included in here okay so these are excluding executive councillors okay so legislative council रे तमरा membership increase हला from 16 to 60 but official majority return करा गला provincial councils रे non official majority रे allow करा गला okay सब province रे number vary कला but सब province रे all provincial councils रे
नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी एबे अलाउ करागला ओके 1909 रे राइट सो डेलिबरेटिव पावर्स तमर काउंसिल मानकर डेलिबरेटिव पावर्स सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पचारि परिबे बजट रिजर्वेशन दे परिबे सेपरेट बजट वोटिंग होल बजट एबे भी वोटेबल नहीं बट सेपरेट बजट पई वोटिंग हबो बट वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ बजट रिजोल्यूशन की बजट वोटिंग मेंबर माने करि परिबे ओके सेपरेट इलेक्टोरेट ओके तमे जेन जानचा 1906 रे मुस्लिम लीग इंटू फॉर्मेशन हला तो 1909 रे ही सेपरेट इलेक्टोरेट को आइडिया को से सही 1906 रो सिमला डेपुटेशन जो जाइथिले आगा खान लेड बाय आगा खान ओके अकॉर्डिंग टू दैट रिकमेंडेशन तमरा सेपरेट इलेक्टोरेट स्टार्ट करा गला मुस्लिम्स गिवन एक्सक्लूसिव इलेक्टोरेट कम्युनल रेजिम को लीगलाइज करा गला ओके कम्युनल रेजिम वाज लीगलाइज्ड इन दिस एक्ट ऑफ 1909 so Lord Minto is also called the father of communal electorate okay again Indian representation Satyendra Prasad Sinha so he was the first Indian on Viceroy Executive Council as law member okay तो आम जेन देखिलु तमरा 5+1+60 तो ये जो 5 भितर तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन ऑन वाइसरॉयज एमे देखिले एटा होची 5+1 दिस इज द वाइसरॉय रो एग्जीक्यूटिव काउंसिल so Satyendra Prasad Sinha was the first Indian on Viceroy Executive Council and he was associated as the law member. Okay. Again, ये जो deliberative powers हम तो देखिले deliberative powers से सेंति किछि तांकर power दिया हितला but they had no real power. The councils were only platform for criticism only. Okay. खाली criticism करिया but किछि action नहीं ता ऊपर. Okay. Again, एथिरे nomination ओके ये जो 60 जन जो मेंबर अछंती तो सेठी nomination भी होचंती nomination of official and non-official member continue भी ହେଇଥିଲା plus direct election भी introduce ହେଇଥିଲା but again just like the previous act it was very indirect and very remote okay election भी होतला plus nomination भी चालतला okay then group representation ର ଗୋଟେ scope दियाला separate seat for presidency corporation chamber of commerce universities जमींदार्स okay so देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट माने भाबिले जे रिप्रेजेंटेशन दबाको तो डेमोक्रेटिक डिवोल्यूशन रो process तो अच्छी but this representation should be driven by class interest okay because that was the only practical method to embody the elective principles okay because से टाइम रे डायरेक्ट इलेक्शन जाय कि लोकन को जाय कि वोट मागिबा डायरेक्ट इलेक्शन एपन तो पॉसिबल नथिला तो सेमाने चाहिले जे हमें इलेक्शन केमति करबु थ्रू क्लास इंटरेस्ट ओके जेमति रिलीजन थ्रू देखिले कि ग्रुप इंटरेस्ट देखिले जे प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन पे किसी सीट रखा जीवो चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे किसी सीट रखा जीवो यूनिवर्सिटीज जमींदार्स कि तमरो लोकल प्रोविंशियल काउंसिलर्स पे किसी सीट रखा जीवो ओके तो एमती ग्रुप रिप्रेजेंटेशन रे काउंसिल सीट्स पे डिवाइड करा होतला ओके सो दैट वाज द प्रैक्टिकल मेथड टू inculcate people opinion ओके एबे गला काउंसिल एक्ट एबे आसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगेन काउंसिल ऊपर सब सहिला एबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मुझे जेमति एक्सप्लेन करछि एबे वाइड रिफॉर्म्स करा जिवो केवल काउंसिल रे ही मैनिपुलेशन हबनी एबे वाइड रिफॉर्म्स तयारी हबो ओके सो वाइसरॉय वाज लॉर्ड चेम्सफोर्ड अगस्त 20 अगस्त 1917 रे डिक्लेरेशन करथिले आमर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बाय मोंटागू that he said that the aim of British government is gradual responsible government but is the introduction of gradual responsible government in India but as an integral part of the British Empire okay so it is gradual responsible government in India ra idea jin deitile tam 1917 रे Montagu he was the secretary of state for India okay but again the से टाइमलाइन किसी स्पेसिफाई करनतले जे को टाइम रे केते रिप्रेजेंटेशन केते तांकर रेस्पोंसिबिलिटी गवर्नमेंट दिया जीवो एटा इंडियन मैन डिसाइड करिवे एटा ब्रिटिश मैन डिसाइड करिवे ओके so according to this promise of 1917 government of India act 1919 आसिला ओके तो डिवोल्यूशन करा गला तो डायर की इंट्रोड्यूस करा गला डायर को इंट्रोड्यूस करा गला एट प्रोविंसेस ओके एट प्रोविंसेस तमरो जहां भी डिवोल्यूशन हला सब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करा गला गोटे होची सेंट्रल सब्जेक्ट्स आ गोटे होची प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स सो तमे फर्स्ट आइडिया ऑफ सेवन शेड्यूल
फास्ट आइडिया ऑफ 7 शेड्यूल तमे 1919 एक्ट को ट्रेस कर परिबो ओके जेमती तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स आमर जेमती आज का अछि यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट सेमती सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स दीटा सेपरेट करा गला प्रोविंसेस रे जो सब्जेक्ट्स उडा रहिले सेठी जेतु डायरेक्टली प्रोविंस रे इंट्रोड्यूस करा छी प्रोविंसेस रे गोटे रखा हला रिजर्व सब्जेक्ट्स गोटे रखा हला ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स ओके रिजर्व सब्जेक्ट्स आर governed by the governor general actually এটা governor হবো province ର ଯେ governor and his executive council they will rule over the reserve subjects means जोटा कि important subject for British authority to maintain British authority like police हो prison हो land revenue हो finances हो these were reserved by the British okay बाकी transport subjects these were transferred to these legislative councils okay again एई subjects गुडा ପାଇଁ the एई subjects गुडा ପାଇଁ तमरो these subjects were administered by the governor of province with aid and advice of ministers and these ministers were responsible to the legislative council responsible to the provincial legislative council okay तो ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स जोटा कि एते इंपोर्टेंस नथा ब्रिटिश मानन पई दोज वेयर जेमति पब्लिक हेल्थ हो पब्लिक एजुकेशन हो एग्रीकल्चर हो ओके एई सब्जेक्ट वा ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स एंड फॉर दिस सब्जेक्ट्स द मिनिस्टर्स वर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर ओके बाकी तमरा सेंट्रल लेजिस्लेचर सेमति किछि अकाउंटेबिलिटी नथिला ओके सेंट्रल लेजिस्लेचर रे अगेन वाइस रे मेंटेन देयर सुप्रीमेसी ओके तो एई मोंटागो ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स रे तमरा फर्स्ट टाइम सेंट्रल लेजिस्लेचर बाइकैमरल रेजिम इंट्रोड्यूस करा गला ओके बाइकैमरल रेजिम तमरा काउंसिल ऑफ स्टेट वाज द अपर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली वाज द लोअर हाउस दिस काउंसिल ऑफ स्टेट्स वाज द अपर हाउस एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली वाज द लोअर हाउस ओके तो अगेन ए दीटा हाउस रे तमरा इलेक्टेड मेजॉरिटी बेसी मेंटेन करा गला ओके आगर जिंती बोथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स रहउतले एबे मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वर इलेक्टेड इन बोथ हाउसेस ओके अपर हाउस लोअर हाउस बोथ हाउसेस रे इलेक्टेड मेजॉरिटी रहिले इंडियन पार्टिसिपेशन 3 इंडियंस इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ ओके तो एबे देखो तमरा 1919 बेलको आमे जेम देखिले प्रीवियस एक्ट रे तमरो स्ट्रक्चर थिला कोन 5+1+60 ओके एबे कोन हेचंदी ना कमांडर इन चीफ भी इंक्लूड हे जाई चंती तमरो वाइसरॉय रे एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे ओके कमांडर इन चीफ भी इंक्लूड हे जाई चंती तबे यार स्ट्रक्चर होची 6+1 ओके 6+1 6+1 एबे स्ट्रक्चर हेची वाइसरॉय गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6+1 स्ट्रक्चर हेची एबे out of the six members three were to be Indians in Viceroy's Executive Council okay एबे इंडियन मानकर शेयर बढ़ुची okay so this was the Indian participation electoral expansion एबे जेमति तमे लास्ट देखितलो सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स केवल दिया हैतला एबे सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर एक्सटेंडेड टू सिख्स एंग्लो इंडियंस इंडियन क्रिश्चियंस यूरोपियंस ओके एबे सब बहुत बड़े सेपरेट इलेक्टोरल एक्सपेंशन करा गला सेपरेट इलेक्टोरेट्स मानको आउ वोटिंग ऊपर क्राइटेरिया सब दिया गला डिपेंडिंग फ्रेंचाइज दिया गला डिपेंडिंग ऑन क्राइटेरिया प्रॉपर्टी टैक्स एजुकेशन एक्सेट्रा ओके अगेन ए 1919 एक्ट रे तमरो women were given the right to vote in the 1919 act okay but 1919 act the women got voting rights but जेहेतु एते फ्रेंचाइज रे बहुत बड़ा कंडीशन थिला प्रॉपर्टी टैक्स तो ओनली द elite sections okay not everyone but women got the voting rights for the first time in 1919 okay again तमर 1919 act रे तमर गोटे पब्लिक अकाउंट कमिटी तमे जे पढिया पार्लियामेंट्री कमिटी तमे पढियो परे आसीबो तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी was set up for the first time in 1921 रे सेटअप करा गला तो पब्लिक अकाउंट कमिटी तयारी करिया पे रिकमेंडेशन फर्स्ट हेइतला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रे पब्लिक अकाउंट कमिटी को सेटअप करिया पे रिकमेंडेशन थिला तो पब्लिक अकाउंट कमिटी फर्स्ट सेटअप हेइतला 1921 रे अकॉर्डिंग टू द 1919 एक्ट ओके अगेन तमरो एटा गला तमरो प्रोविंस मानको एबे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोविंस मानको किछि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दिया गला टू enact their own budgets okay but again you know this power
was just they could not actually do many things. Okay, so ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ limitation ଥିଲା ତ ସେ ବହୁତ କିଛି changes କରିପାରିବେନି. Okay, so High Commissioner for India ଗୋଟେ establish କରାଗଲା, ଗୋଟେ office କରାଗଲା. It was established in London. ତାର main aim ଥିଲା to look after the Indian trade in Europe. Okay, Indian trade in Europe and Secretary of State for India. Okay, ତ Secretary of State of India ପାଖରେ ସେ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ. ଏବେ ୟୁରୋପିଆନ ଟ୍ରେଡ୍ କୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ଠୁ ଟ୍ରେଡିଂ ରୋଲ ଟା ସେପାରେଟ କରିଦିଆଗଲା, ହାଇ କମିଶନ କୁ ଦେଇ ଦିଆଗଲା. ଓକେ, ଏଗେନ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ରିଫର୍ମ ତିଆରି ହେଇଥିଲା. ଏବେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ତ ହାଇ କମିଶନର ତମେ ଜାଣିଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଲଣ୍ଡନ, ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ ୟୁରୋପ କୁ ବୁଝିବେ. ଏବେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଟା ବୁଝିବନି, ହାଇ କମିଶନର ଫର ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ଟ୍ରେଡ୍ ପାର୍ଟ ଟ୍ରେଡିଂ ପାର୍ଟଟା ବୁଝିବ. ଓକେ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଫର୍ମ ତିଆରି ଗଲା. ନାଉ ହି ୱିଲ୍ ବି paid by British Exchequer, paid from British revenue. Okay, not from the Indian revenue. Okay, ତମର ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1793 ରେ ସ୍ପେସିଫାଇ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତମର ସରି ତମର ହଁ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟରେ ତମର ଅଲଗା ଯୋଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତମର ବୋର୍ଡ 1793 ରେ ତମର ଯେମିତି ବୋର୍ଡ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ତାଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁ ଟାକୁ ସେମାନେ ନେବେ ଫ୍ରମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟ୍ରେଜେରୀ. ଓକେ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦ୍ୟାଟ ୱାଜ ଆନ୍ ଇନଜଷ୍ଟିସ ଫର ଇଣ୍ଡିଆ. ଓକେ, ତ ଏବେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେଭିନ୍ୟୁରୁ ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ନେଉଥିଲେ. ବଟ୍ ନା 1919 ଆକ୍ଟରେ ସ୍ପେସିଫାଇ କରାଗଲା ଯେ he will be get paid from British Treasury. Okay, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ରିଫର୍ମ. ତ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ତ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଥିଲା. ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା ଇନ୍ 1926. ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମ୍ବର ଅଫ ପ୍ରିନ୍ସେସ ଅର ନରେନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଗଲା 1921 ରେ. ତ ଏଥିରେ ସେଇ 1919 ଆକ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡେସନରୁ ଏଥିରେ 120ଟା ମେମ୍ବର୍ସ ରହିଲେ. ପ୍ରିନ୍ସେସ ପ୍ଲସ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସେସ and representatives of the princess. It was a forum for discussion on shared interest. So this chamber was headed by the viceroy. Okay, ତ again ଏଇ ଯୋଉ 1919 act ର future ରେ review କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ statutory commission ବସିବ after 10 years. That was to be led by Sir John Simon. Okay, ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା ଆମର 1919 ଯାଏଁ ଗଲା. Okay, so again ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଦବା ଡାୟାର୍କି ଉପରେ, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡାୟାର୍କି. ଓକେ, ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ. ତ ସାଇମନ କମିଶନ 1927. ତ 1929 ରେ ସେ ଆସିବାର ଥିଲା, ବଟ୍ 2 years ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲେ. ଓକେ, କମ୍ପୋଜିସନ 7 members chaired by Sir John Simon. Everyone was British. So Congress rejected this proposed Simon Commission. ତ ସାଇମନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ସବୁ ଆସିଥିଲା. ତ ସାଇମନ କମିଶନ ର ପ୍ରପୋଜାଲ ଥିଲା 1930 ରେ. So it was also called the Indian Statutory Commission. Indian Statutory Commission. Okay, Indian Statutory Commission. So it proposed to abolish diarchy in states. Okay, abolish diarchy in states. देखो states मानकरे मुझे देखिला province मानकरे कि states मानकरे तमर जेमते diarchy introduce ହେଇଥିଲା. तो तमे देखो reserve subject रे finance थिला. Okay, but minister मानकर जो काम जो करिवे, but they were accountable to the legislature, but they did not have control over finances. Okay, जेहेतु कंट्रोल नथिला तो मिनिस्ट्रीज कुड नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली. ओके, तो जेहेतु प्रॉपर्ली फंक्शन करि पारनी तो रिकमेंडेशन हला कि डायरकी को अबॉलिश करा जो प्रोविंसेस माना करे. बिकॉज़ अगेन ए जो देखिला तमे जो एथरे गोटे तमे एलिमेंट ऑफ फेडरलिज्म देखुथबो. ओके, जे सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट करा गला, प्रोविंसेस माना करे भी सब्जेक्ट को सेपरेशन कर दिया गला. तो एथरे गोटे एलिमेंट ऑफ फेडरलिज्म को इंट्रोड्यूस करिया को इच्छा थिला. बट इन प्रैक्टिस एक्चुअली सब सेंट्रलाइज्ड यूनिटरी गवर्नमेंट ही चलला. इंटेंशन थिला फेडरल गवर्नमेंट तैयारी करिवा, बट इन प्रैक्टिस यूनिटरी स्टेट ही चलथला. ओके, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ही चलथला. ओके, तो साइमन कमिशन proposed to abolish diarchy at states, expansion of responsible government in provinces, Federation of British India plus Princely States. ए फेडरेशन गोटे तैयारी करिया रिकमेंडेशन देइथिले, एंड कम्युनल इलेक्टोरेट should continue. ओके,
ओके कम्युनल इलेक्टोरेट शुड कंटिन्यू तो ए साइमन कमिशन प्रपोजल को स्टडी करिया पई तमरो तुम जानछ तीनटा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बसिला तापर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर तमरो गोटे जॉइंट कमिटी ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट तमरो ब्रिटिश पार्लियामेंट रो दीटा हाउसेस रो जॉइंट कमिटी गोटे बसिला दिस जॉइंट कमिटी वाज हेडेड बाय लिलिथ गो ओके এই जो लिलिथ गो जो हेड कले तापरे এই सब स्टडी परे तमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आसिला ओके 1935 आसिला तो ता पूर्व गोटे कम्युनल अवार्ड थिला 1932 रो ओके so this was proposed by Ramsey MacDonald for minority representation okay तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो थिला मुस्लिम्स सिख्स क्रिश्चियंस एंग्लो इंडियंस यूरोपियंस एंड एगुड़ा सब आगुरी तो थिला तमरो 1919 एक्ट रे एक्सटेंड कराइतला this communal award proposed to extend the separate electorates to depressed classes also okay but gandhiji oppose kale he fasted in Yerawada jail against this proposal okay tapare Pune pact sign hala between Gandhi and Congress and Ambedkar okay so joint Hindu electorate rahibo but separate reserved seat for depressed classes okay तो हिंदू इलेक्टोरेट मानकर सेपरेट हेबेनी तो हिंदू इलेक्टोरेट मान भितर रिजर्वेशन दिया जिवो डिप्रेस क्लासेस को ओके so government accepted this proposal and incorporated the same into government of India Act 1935 okay now comes the government of India Act 1935 okay तो एटा लॉर्ड विलिंगडन सेतबेले थिले तो 321 सेक्शन 10टा शेड्यूल ए जिनसटा मन रखिबो एटा मे बी तुम प्रिलिम्स पॉइंट रे गोटे पचारि पारे 321 sections and 10 schedules okay so this was the largest act passed by British parliament okay जेमते मु कहली एई एक्ट पास करिया पई जॉइंट सेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट बसला दैट वाज हेडेड बाय लॉर्ड लिनलिथगो ओके तो 1935 रे गोटे ऑल इंडिया फेडरेशन प्रपोज करा गला again this was proposed by Simon commission also all India federation एथिरे provinces रहिबे plus princely states रहिबे okay but in this federation the rulers of princely states were semane किछि साइन करिया पडियो गोटे instrument of accession mentioning the extent to which their authority was to be surrendered to the federal government okay तो जेहेतु अथॉरिटी को सरेंडर करिवार क्वेश्चन अछि तो दिस एक्टेड एज अ डेटरेंट फॉर द प्रिंसली स्टेट्स नॉट टू एक्सेप्ट दिस फेडरेशन ओके तो जेहेतु एमाने जॉइन कलेनी तो दिस फेल्ड द स्टेट्स डिड नॉट जॉइन सो ए प्रपोजल टा फेल हो गला ओके अगेन तो पावर डिवीजन रो थिला इथरे फेडरल सब्जेक्ट्स 59 सब्जेक्ट्स जदि फेडरेशन हेई थांता जेहेतु हेलानी बट प्रपोजल थिला जे फेडरेशन हेले तादरे डिवीजन ऑफ पावर्स रहिबो फेडरल सब्जेक्ट्स 59 रहिबो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 54 दिया जिवो कंकरेंट लिस्ट रे 36 टा आइटम रहिबो और रेसिडुअल पावर जहा रहिबो दैट रेस्ट विथ द वाइसरॉय ओके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस ओके तो एटा गोटे देखियो तमरो प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देवा पई तमरो साइमन कमिशन भी हाँ साइमन कमिशन रेकमेंड करथिले एक्सपांड रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट टू प्रोविंसेस तो एबे कोन हला दिस प्रोविंसेस दे डिराइव देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन ओके again they had independent financial powers and resources they can borrow money on their own security okay तो एबे प्रोविंसेस वेयर पूरा से माने पूरा ऑटोनोमस हे गले फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी ओके सो से प्रोविंसेस माना करे रेस्पोंसिबल गवर्नमेंट पे इंट्रोड्यूस करा गला ओके डायरकी सेंटर रे इंट्रोड्यूस करा गला प्रोविंसेस रे अबोलिश कर दिया गला ओके पूरा अबोलिश कर दिया गला सेंटर रे डायरकी इंट्रोड्यूस करा गला ओके टिल 1939 बिकॉज 1939 जाए कि ही ए दिनसटा चली परला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक्चुअली द leaders of the people they did phenomenal work during these 2 years 1937 and 1939 ଭିତରେ but 1939 ରେ congress ministries they resigned because India was dragged into the second world war without consulting Indians okay तो सेटा प्रोटेस्ट करिया पे 1939 रे सब कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन कर देले okay तो okay so डायरेक्टरेट सेंटर इंट्रोड्यूस करा गला एबे बाई कैमरल रेजिम इन 6 प्रोविंसेस तो तम 1919 एक्ट रे 1919 एक्ट रे तमर सेंटर रे डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करा हैतला एबे 1935 एक्ट रे डायरेक्ट प्रोविंसेस रे इंट्रोड्यूस करा गला दे वर बेंगल बॉम्बे मद्रास ओके एटा तीनटा प्रेसिडेंसी थला त प्रेसिडेंसी ऑफ बेंगल बॉम्बे मद्रास आ बाकी रहला बिहार और असम एंड यूपी यूपी तुम मन रख पारिबो यूपी रे जेतो पॉपुलेशन अधिका अछि तो बाई कैमरल रेजिम दरकार हबो बिहार और असम ओके बाकी ए तीनटा तो तमरो ऑलरेडी जेतु प्रेसिडेंसी थिले तो एठी बाइकैम रेजिम इंट्रोड्यूस करा गला यूपी रे पॉपुलेशन अधिका बाइकैम रेजिम दरकार नेक्स्ट आसाम और बिहार ओके बाइकैम रेजिम इंट्रोड्यूस करा गला छटा प्रोविंसेस रे सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सटेंड करा गला एक्सटेंडेड टू डिफरेंट ओके
to depressed classes, women, laborers. Okay, okay, this separate electorates no eta, but DC जो depressed classes they were included in Hindu electorate. Okay, so এটা separate electorate to DC এটা লিখিলে ভুল হবো because government accepted the proposals of Pune Pact, so separate electorates to depressed classes କହିଲେ ଭୁଲ ହବ, they got reserved seats within the Hindu electorate. Okay, but women ho liberal ମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି separate electorate ଦିଆଗଲା. Okay, franchise was extended to 14% of the population. Again ବହୁତ ଗୁଡେ rules ଥିଲା, education ହଉ property criteria ହଉ ବହୁତ କମ ଲୋକ ହିଁ directly voting କରିପାରିବେ. franchise was extended. Okay, ଆଉ କିଛି ତମର ତମର ଏଇ ଯୋଉ provinces hierarchy ହେଲା ଆଉ ଯୋଉ provinces ମାନଙ୍କର ହେଲା, again provinces ମାନଙ୍କୁ autonomy ଦିଆଗଲା ଆଉ hierarchy center ରେ introduce କରାଗଲା, but again ପୁଣି ସେଇ provinces ମାନଙ୍କରେ ହିଁ provincial autonomy ଦିଆଗଲା, but 80% of demand for grant, ଯୋଉ demand for grant ସେଗୁଡାକ province ମାନେ ସେମାନେ vote କରିପାରି ତଥାପି କରିପାରି ନଥିଲେ because ତାଙ୍କର 80% of demand for grant that could not be accepted or rejected by provincial legislatures. Okay, provincial legislature जो council of ministers ସେମାନେ 80% of budget ରେ voting demand for grant ରେ voting କରିପାରିବେନି. Okay, so but ସେମାନେ voting କରିପାରିବେନି, but responsible government ଯେହେତୁ introduce କରାଗଲା they can be removed by a vote of no confidence. Okay, तो provinces ରେ direct financial autonomy पूरा clear picture नथिला. Okay, 1935 act रे तो hierarchy center introduce କରାଗଲା. abolition again देखो ये जो hierarchy in center. Okay, तबे सेमती फेडरल तम सेंटर रे जो सब्जेक्ट गुडा रहिले तार पुनी रिजर्व किछि रहइबो, किछि ट्रांसपोर्ट रहइबो, बट अगेन ए जो hierarchy at center ए प्रोविजन टा केबे ही माने एक्शन को आसी पारला नाही. ओके, बिकॉज फेडरेशन ही तैयारी हलानी, फेडरेशन तैयारी हलानी जेतु प्रपोजल थला जे फेडरल सब्जेक्ट जो सब रहिबे फेडरल सब्जेक्ट को कैटेगरी करा जिवो रिजर्व और ट्रांसपोर्ट रे, बट जेतु फेडरेशन ही हलानी तो ए सब किछि हलानी. तो hierarchy सेंटर प्रपोज थिला इंट्रोड्यूस भी कराला, बट केबे एक्शन को आसी पारला नाही. ओके, अगेन आ गोटे प्रोविजन अछि तमरो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ऑफिस थिला काउंसिल ऑफ इंडिया. ओके, काउंसिल ऑफ इंडिया जोटा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट that was abolished and the secretary of state for India was provided with a team of advisors. Okay, secretary of state टाको abolish तो नुह डायरेक्ट पूरा टोन डाउन कर दिया गला, टोन डाउन कर दिया गला. ओके, abolish करा जिवो देयर नेक्स्ट हमर नियर नेक्स्ट एक्ट रे. ओके, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स सब हला, आरबीआई क्रिएट करा गला. हमर जेमति इकोनॉमिक्स रे पढ़थिवो आरबीआई एक्ट 1934. ओके, 1934 तो आरबीआई क्रिएट करा गला 1935 एक्ट रे, 1935 रे. ओके, एक्ट हल 1934 रे, that was accepted in the 1935 act. Okay, so institutions federal PSC provincial public service commission plus joint public service commission भी 1935 act रे propose करा हितला. फेडरल कोर्ट propose करा हितला 19 आउ सेटा सेटअप हितला 1937 रे. अगेन 1935 act रे establishment of integrated judiciary. integrated judiciary माने तमरो both this court same court for federal and provincial laws. Okay, so integrated judiciary भी propose करा हितला 1935 act रे. Again territorial changes, Burma was separated from India, नुआ ना province करा गले ओडिशा और सिंध. ओडिशा जेमति तमरो 1st April 1936 रे establish करा गला ओडिशा. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रे propose करा हितला जे ओडिशा should be a separate province. फेडरल रेलवे अथॉरिटी हितला ऑडिटर जनरल एस्टैब्लिश करा हितला 1935 एक्ट रे. सो दीज आर prelim pointers. Again the right to amend the act that remained with the British Parliament. Okay, after all this 1935 act was a rigid constitution and right to amend the act rested with the British Parliament. ଆଉ ଯାହା ବି तुमको दिया गला सब इंडियन रिप्रेजेंटेटिव मानो पावर, तथापि viceroy can veto a bill even if passed by the Federal Assembly. ओके, तार भी प्रोविजन थिला जे viceroy रो सुप्रीमेसी 1935 पर्यंत ही मेंटेन करा हिची पूरा. ऑलराइट, नाउ कम्स द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. viceroy was Lord Mountbatten. ओके, तो एटा viceroy कहिबाटा ही भूल हबो, गवर्नर जनरल. हम जेंति फास्ट देखिलु
भाइसरॉय टर्म टा भूल करे बिकॉज एबे इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दिया गला भाइसरॉय इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग इन इंडिया तो एबे इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दिया गला एबे केवल भाइसरॉय ही रहे सॉरी एबे केवल गवर्नर जनरल ही रहिला तो माउंट बैटन को भाइसरॉय कहवाटा भूल हबो ओके माउंट बैटन को गवर्नर जनरल कह जाय परिबो ओके तो Mountbatten accepted the partition plan proposed in June 3, 1947. This plan was accepted by Congress and Muslim League. Okay, so independence was granted on 15 August 1947. The 1947 रे दीटा dominion तैयारी करागला India and Pakistan. Okay, could exit. Okay, sorry. So गोटे जिनस माउंट बैटन को भाइसरॉय भी कहा जाय परिबो तांको गवर्नर जनरल भी कहा जाय परिबो ओके बिकॉज 3 जून 1947 रे ओके देखो तमर 15 अगस्त 1947 रे इंडिया इंडिपेंडेंट हैला बट माउंटबेटन was accepted Mountbatten was appointed as the viceroy before 1947 okay तो 1947 ପରେ ହିଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ପୁରା ଦେଇଦେଲେ इंडिया को इंडिपेंडेंस ओके तो माउंटबेटन को ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା माउंटबेटन was the last viceroy of India okay and he was the first governor general of independent India all right he was the first governor general of independent India तो माउंटबेटन का ପରେ गवर्नर जनरल हेले तमरो सी राजगोपालचारी ओके तो दिस वाज माउंटबेटन को आमे लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कहि परिबा ओके 1947 रे इंडिया पाकिस्तान दीटा डोमिनियन हला तो डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान तांकर इंडिपेंडेंस थला दे कैन एग्जिट द कॉमनवेल्थ ओके गवर्नेंस रो चेंजेस कोन हला देखो 1947 ପରେ ଭାଇସରୟ ଆବଲିଶ ହେଲା ଓକେ ଭାଇସରୟ ଆବଲିଶ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଫର ଇଚ୍ ଡୋମିନିୟନ ଓକେ इंडिया ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଓକେ ଦିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ was appointed by the British king on the advice of the Dominion cabinet alright ଏଟା ରିମେମ୍ବର जो गवर्नर जनरल माने हेले दिस गवर्नर जनरल was appointed by the British king on advice of the Dominion cabinet so secretary of okay secretary of state एको abolish कर दिया गला रोल his role was abolished तो फर्स्ट 1935 एक्ट रे टोन डाउन करा हेतले ताका पावर को 1947 एक्ट रे ताको पूरा abolish कर दिया गला and his powers were transferred to the secretary of state for commonwealth affairs okay and secretary of state for India was abolished the end of British control so constituent assemblies पसिला दी जनकर दीटा का डोमिनियन रे to make the draft constitution that they had the independence to repeal British laws including this 1947 act तो डोमिनियन रे जो असेंबली सब तैयारी हला this assembly could legislate till the new constitutions were adopted okay तो till the constitution was adopted in 1950 this dominion assembly functioned as the parliament of India okay British paramount enlarged princely states became autonomous ताको इंडिपेंडेंस दिया गला ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ इंडियन डोमिनियन को जाई परिबे पाकिस्तान डोमिनियन को जाई परिबे अदरवाइज ସେମାନେ ଚାହିଁले इंडिपेंडेंट भी रही परिबे ओके again civil services जो माने न्यू रिक्रूटमेंट बाय द डोमिनियंस प्री 1947 जो माने अपॉइंटीज रहितले दे विल रिटेन देयर बेनिफिट्स ओके आगुरु प्री 1947 रे जो माने सिविल सर्विस अपॉइंटीज होतले दे वर अपॉइंटेड बाय द secretary of state okay leadership Lord Mountbatten he was the first governor general of India he was the last viceroy of India constituent assembly in 1946 it became India's parliament तो एटा हमें देखिले तो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 15 अगस्त 1947 रु 1950 पर्यंत जो पार्लियामेंट चलतला तो ए जो टिके पोर्टफोलियो गुडा मन रख दबो तो किछि किछि इंपोर्टेंट अछि जवाहरलाल नेहरू ही बिकेम द पीएम एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ पोर्टफोलियो रखिला साइंटिफिक रिसर्च रे पोर्टफोलियो रखिला सो दिस इज इंपोर्टेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ स्टेट्स ए तीनटा को वल्लभ भाई पटेल कर राजेंद्र प्रसाद इन फूड एंड एग्रीकल्चर मौलाना अबुल कलाम आजाद इन एजुकेशन बाकी आउ एते दरकार नाही आर के सन्मुगम चेट्टी फाइनेंस ओके बी आर अम्बेडकर लॉ एटा दिन संबंध दो राजकुमारी अमृतकर ओके सी हेडेड द हेल्थ पोर्टफोलियो तांको ऊपर टिके जानिबो she was the only female cabinet member of independent of the interim cabinet okay only female cabinet member and she was responsible for establishing the aims okay
इंडिपेंडेंस पर एम्स एस्टाब्लिश करते आउ शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1950. ओके, सो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन 1950. ओके, राजकुमारी अमृत कौर. तो ये इंपोर्टेंट, बाकी आउ किसी एते दरकार नहीं. ओके, so this was all about the till in 1947. जस्ट टिके एई जिनसटा देखिदबो तमरो ए जिनसटा 1861 रे जेमति तमरो 1853 रे तमरो थिला 4+1+7 6+1. ओके, 1861 रे तमरो हला 5+1 plus 6 to 12. 1892 रे 5+1 plus 10 to 16. 1909 रे 5+1 plus 60. ओके, then 1919 रे 1919 रे 6+1 because commander in chief became a member of the viceroy executive council. Okay, became a member plus 1919 रे तमरा bicameralism आसीगला. Bicameralism आसीगला. Okay, so I think this much for today. Thank you.